the slower bouncer, but it is a wide because it sails over the head of Saud Shakil. So it is now, if I recall correctly, the 9th wide of the innings. So 1.5 overs of not just runs but extra deliveries, and Pakistan and 143 for 2. You could see what Hardik Pandya, who's been brought into the attack, was trying to do: bowl the short ball and try and see where he can induce a false shot. But it sailed over Saud Shakil's head, who couldn't even reach it if he tried. Here is Pandya, comes in and bowls, and this one is the shorter delivery, in fact rather the slower delivery, I beg your pardon, on the leg stump and tucked away down to deep mid wicket for a single. So Hardik today, the wicket was there from the length spot that he got Babar Azam between 6 and 8, and then you've had quite a bit in the shorts area. That is 37% of his deliveries have been there. His slowest have been 114, average 130. So he's been able to mix up the pace, and I think that that is something that is what the other bowlers should try and emulate. Here he goes, 144 for 2. Comes in and bowls to, well, there's one, that ball keeping low and going underneath the bat and taken on the first bounce by Rahul behind the stumps. And you can see over here immediately the double bounce on this wicket as it keeps slowing down. And that's where we were saying it. He had run his fingers over the seam. It was the slow delivery, but even then you could see going on the second bounce to the keeper. That is what India will have to think about. 118, 121, 121. Those have been the 3 speeds in the over so far. So not really slow. But yeah, drifting onto the pads there of Mohammad Rizwan, who tucks it away to square leg next to the square leg umpire. And they're able to pick up a single. In fact, it was a leg by going off the pad. But they'll take it anyway it comes. The score predictor ticking up to 280. At one stage, it was under 250. And I dare say if they keep going for another 3 or 4 overs, it will take over the 300 mark. India need a wicket. Where are they going to get one from? And that is what must be seizing the dressing room, the coach, and certainly the captain. We still have to wait and tell you where we are in terms of the over rate, but here goes Hardik Pandya. It is the slow delivery and tucked away off his pads down to long leg, and it is a single that comes through. Well, singles really won't hurt the Indian team so much, but the fact is that they're not picking up the wickets. You've got Tayyab coming in, you've got Salman, you've got Kushdil, you've got Shaheen. You know, Kushdil can hit the ball. He hit a very good 60 of just 40 deliveries against New Zealand, losing cause. So you've got the big hitters coming up, including Salman Agha. So it's really now, when are they going to? I think around the 35th over is when they're going to go for the big shots. Shots in the air, trying to hit the sixes. No 6 in the innings so far from Pakistan. This time it is the short delivery. Down the track goes Rizwan, and it was too short for him to pull as he tries to go through for the second. In fact, does go through for the second. But once again, a poor throw there, and allows that second run to be taken. For a moment, I thought that they wouldn't, but the century partnership between Shakil and Rizwan is the 18th occasion when the batters have added 100 more runs for the third wicket in the Champions Trophy. Intriguing. And that one, if it had been on target, that throw might well have been a chance for a run out, but it was wide of the non-striker's end, and that is not good fielding, especially when you're trying to pick up a wicket in these circumstances. 148 for 2 coming up to the end of the 33rd over is 144. Saud Shakil 56. Shoulders slumping slightly. This one down the track, ball high in the air. Is it going to be caught by somebody? It's coming down somewhere, and in fact is dropped, as I thought it might be, and in fact not just dropped, but it goes through, I think, for 2 runs. Yes, it is. It went very high in the air, to run back did Harshit Rana, and frankly I thought the moment it went up in the air it was not going to be caught. At the end of the over, 150 for 2. इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट
ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, अरे नो टेंशन, करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें। तो मोहम्मद रिजवान को पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर एक जीवन दान मिलता हुआ, और इस तरह के कैच अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लपक लिए जाने चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों सुनील गुप्ता को गेंद को हिट करने के बाद ही ये आभास हो चला था कि वो कैच शायद लपका नहीं जा सकेगा। फिलहाल 151 2 विकेट के नुकसान पर। I'll tell you why. It was high. He had to run back, but we've seen catches like that being taken when they go very high. He's new to the team. He really got his fingers behind. He got his fingers underneath the ball, but really in no position, not a stable pace. Those are the things you got to think about. This time, bowl him. Absolutely bowled him down the track so that drop not too costly, but it was a slow delivery by Akshar Patel. Played all over and round it, and that wicket that India was searching for finally comes courtesy Akshar Patel. Rizwan out bowled for 46. And is this the type of resuscitation that the Indian team needs on the field? Ashish Chirangu. शानदार सफलता भारतीय दृष्टिकोण से। अक्षर पटेल की ये गेंद एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे, वहाँ पर लेग स्टंप की तरफ हट गए थे, उस गेंद के कहीं भी आसपास नहीं थे, और बल्ले को घुमाया उन्होंने ज़रूर, लेकिन गेंद बल्ले के नज़दीक से होती हुई सीधा जाकर स्टंप पर टकराई, और भारत को मिलने वाली आज की ये तीसरी सफलता। 46 रन बनाए 77 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 3 चौके शामिल और लगभग 60 का उनका स्ट्राइक रेट। लेकिन भले ही आउट होकर वो वापस पवेलियन लौटे हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने आज एक शानदार पारी खेली। साउथ शकील के साथ मिलकर उन्होंने एक स्थायित्व दे दिया है टीम को, और 151 रन जो अब बोर्ड पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की टीम के सामने। अब मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों के पास एक अवसर है इस मौके को भुनाने का, कुछ बड़े शॉट्स लगाने का। उनकी टीम में कुछ बड़े स्ट्रोक प्लेयर हैं, तैयब ताहिर की बात करें, सलमान आगा की बात करें, खुशदिल शाह की बात करें, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया। उनमें एक क्षमता है कि वो बड़े स्ट्रोक खेलकर अपनी टीम के स्कोर को एक ऐसी मंजिल तक पहुंचा दे जहां पर भारत के लिए चुनौतियां काफ़ी कठिन हो जाए। मुझे लगता है कि इस समय उनकी नज़र में जो स्कोर होगा वो 280 के आसपास का होगा। Yes, I agree with you. I think 280 is a good score to put up. It's a score that India will have some chasing to do, some thinking about. But I keep coming back. You said, Sunil Gupta immediately said that that catch is not going to be taken. And I told you, I said it's not going to be taken. Even though it was well within the field of play, but you just have this feeling. Here goes Akshar Patel, and he's bowling to Salman Agha, who's coming to the fall of Rizwan's wicket with a slip in place. 151 for 3. गट फीलिंग्स भी कभी कभी काम कर जाती हैं, और मेरी गट फीलिंग ये है कि मुकाबले में इस समय भले ही पाकिस्तान एक बेहतर स्थिति में नज़र आ रही है, लेकिन मुकाबला भारत जीतेगा। हालांकि कमेंटेटर को बायस नहीं होना चाहिए, और हम बायस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ गट फीलिंग की बात कर रहा हूँ। फिलहाल अगली गेंद, और इस बार फ्रंट फुट पे आकर इस गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ। वाइडिश डीप मिड ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले 1 रन का इजाफा पाकिस्तान के स्कोर में हो चुका था। इस 1 रन के साथ पाकिस्तान की टीम का स्कोर 152, 3 विकेट के नुकसान पर। और उस गेंद पर अक्षर पटेल की मुझे लगता है कहीं ना कहीं रनों की रफ्तार बढ़ाने के प्रयास में वो स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी। मोहम्मद रिजवान ने पिछले ओवर में भी भाग्य ने उनका साथ दिया था जब गेंद वो कैच टपक गया था, और इस समय दूसरा एक मौका वहां पर कुलदीप यादव ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन उस कैच को मुकम्मल नहीं कर सके, और इस तरह से एक जीवन दान वहां पर मुश्किल ज़रूर था साउथ शकील के लिए। 153 3 विकेट के नुकसान पर। Well, I really can't say anything because those are the types of catches you got to take. You see New Zealand, you see Australia, you saw Alex Carey yesterday. What catches he was taking. Now, Kuldeep Yadav is not the swiftest mover. The field, you cannot have him at long on. You know they're going to go for their shots. You've got to have a better fielder, a speedier fielder there to be able to get those types of catches. So you can't really blame him. You've got to have the right fielder in the right place. At the end of 34, it's 154 for 3. So you were saying exactly the point I was making before, right? We've seen 2 catches dropped already. Now Harshit Rana running back, but he has his eyes on the ball. He got his hands underneath the ball. You have to take those catches.
You're not going to take those catches. Luckily, Rizwan was out in the next over. But that does not put a very good feeling in the fielders. And now Kuldeep Yadav, as you said, slow fielder in the outfield. At the time you know the Pakistan batsmen are going to step on the gas and hit the big shots, had the right fielder in that place. Right, and that is where I think that the captaincy must be looked at, or rather the captain must look at these things as to, do I have the right fielders in the right spots at the time of this innings? 34 ओवर की समाप्ति के बाद 154 3 विकेट के नुकसान पर 154 for 3. Then Hardik Pandya picked up the first wicket. Salman Agha is on strike, right-handed batsman. As here is Pandya comes in and bowls, and this ball is dabbed away down to third. Picks up a single, does Agha, and moves on to 3. Pakistan 151 or 55, beg your pardon, for 3. दो जो कैचेस अब तक भारत ने छोड़े हैं, एक हर्षित राणा ने और कुलदीप यादव ने, उसमें मैं सोचता हूं कि कुलदीप यादव के लिए जो कैच था वो अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान था. हर्षित राणा को पीछे की तरफ दौड़कर उस कैच को मुकम्मल करना था, जो कि निश्चित रूप से थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन कुलदीप राणा का अगर पूर्वानुमान बेहतर होता तो शायद वो उस कैच को मुकम्मल कर सकते थे. Well, as I said, you have to have the right fielders in the right spots. A person who's quickly off the blocks to take a catch like that, can dive. Don't really blame him, because he does not have the capability really to be in that position. Therefore, you have to think about why the captain put him there. Nevertheless, here is a full toss from Hardik Pandya. Couldn't make full use of it there. Saud Shakil, surprised perhaps by that full toss that came outside the off stump and played away with a turn of the wrist, but straight to mid-on within the circle. 155 for 3 then. Now you drop 2 catches every innings. We saw 2 catches dropped in the Bangladesh game. We've seen 2 catches dropped in the Pakistan game. That is not a good augury for going on to win the tournament. Forget this game. This game is one game. You've got to win the tournament. And whatever happened in 2017 and all, you've got to put that behind you. You've got to forget those things. You've got to focus on the Champions Trophy. Here goes Pandya. This is slightly short of a length and pulled away magnificently, handsomely down to deep backward square. 4 runs. Really odd. The type of delivery. It was an ordinary delivery and so easy to put away for a batsman who's been in there for a very long time. He's already into the 50s, now into the 60s, on 58. That is meat and drink. You're really giving him what he wants, and a huge gap between deep square leg and fine leg, and into that gap. Half tracker, pulled away magnificently well, just swiveled, and that was 4 runs. So you've picked up a wicket. Try and put this pressure on, but not really happening. Nevertheless, 159 for 3. Coming up to the middle or the last 5 overs of the second power play. Here goes Hardik Pandya. He's into his 8th over, 1 for 30. So still not poor figures, but under the circumstances, not perhaps the best delivery. No sixes, just the 13 boundaries as we wait for him to bowl to Saud Shakil. 62, very good 62 of 74 deliveries. Pandya around the wicket now to Shakil, and this one gets a slightly slower ball, slightly back of a length, who rides the bounce. 118 k is exactly, and therefore not able to play an attacking shot, and ball trickles away down to backward point. Jadeja picks up. You don't fool with Jadeja. Don't try and pick up any silly singles. And there is a dot ball finally. 159 for 3. Nicely poised this game. Another wicket here, and especially that of Saud Shakil, and India will fancy their chances of bowling Pakistan out for under 250. But if he stays there, and we know the big hitters are still there. Here goes Hardik Pandya. That one is in the air. It's been pulled away down to deep mid wicket, and the catch has been taken by Akshar Patel at deep mid wicket. So the 2 set batsmen back in the pavilion. Saud Shakil, slightly slow delivery into the pull shot, more top edge than middle of the bat, and a good running catch there taken by Akshar Patel. A very safe fielder. 159 for 4 at the end of, or coming up to the end of the 35th over, 34.5. Well, what do you feel about that? We saw a dropped catch, and then he was out bowled. We saw a dropped catch, and now he's bowled out as out Shakil. So I think they feel that, listen, we've had a bit of luck. Let's try and see if we can give them another chance. But he is a very good fielder, is Akshar Patel.
कोई दो राय नहीं इसमें, काफ़ी बढ़िया फील्डर हैं और बहुत आसानी के साथ उस कैच को उन्होंने मुकम्मल किया और मुझे लगता है कि सही पोजीशन पर भी वो खड़े थे। और साथ ही साथ ये भी कहना होगा कि आज अक्षर पटेल ने 3 जो विकेट भारत को मिले हैं उसमें उनका हाथ रहा है। पहले रन आउट इमामुल हक का, उसके बाद एक सफलता अपने नाम की और इस बार इस कैच के ज़रिए भारत को उन्होंने एक और सफलता दिलाई। तो आज कहीं ना कहीं अक्षर पटेल का दिन नज़र आ रहा है। देखना है कि गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में कैसा प्रदर्शन करेंगे। क्षेत्र रक्षण में तो उन्होंने कमाल किया है, एक विकेट भी अपनी गेंदबाजी में उन्होंने अब तक ले ली है और बाकी के बचे ओवर में क्या कुछ कारनामा कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2 झटके जो लगातार पाकिस्तान की टीम को लगे हैं, यहाँ पर अब पाकिस्तान कुछ हद तक बैकफुट पर भी जा सकता है। Yes, that's right, because the true set batsman. Had South Shakil still been there, and maybe, let's say, if somebody had to get out, then Salman Agha, who's just come in, he's just batting on 3, then you would have fancied, yes, that they had their chance. It's now Tayyab who's come in at the fall of Shakil's wicket. That's the first delivery that he gets, that he dabs away down to third, picks up a single, gets himself off the mark at the end of 35 overs, 160 for 4. टीबी से नहीं, भेदभाव से लड़ें। टीबी कोई कलंक नहीं, ये एक इलाज योग्य बीमारी है। अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसे अकेला न छोड़ें, साथ दें, हिम्मत बढ़ाएं और उचित इलाज के लिए प्रेरित करें। याद रखें, टीबी छूने या साथ खाने से नहीं फैलती। भेदभाव नहीं, समर्थन दें, क्योंकि सही इलाज से टीबी ठीक हो सकती है। टीबी मरीजों का साथ निभाएं, भेदभाव हटाएं, जागरूकता बढ़ाएं। हडको द्वारा जनहित में जारी। सिर्फ आवास नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वित्त पोषण करता है हडको। पाकिस्तान की पारी में आज शुरू से ही लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ था वो अंततः साउथ शकील के आउट होने के बाद समाप्त हो चुका है और इस समय बीच मैदान पर 2 दाएं हाथ के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय गेंदबाजों के लिए भी अब अपनी लाइन को साधने का एक अच्छा अवसर है। फिलहाल गेंदबाजी बढ़िया होती हुई वहाँ पर हार्दिक पांड्या के द्वारा, अक्षर पटेल इस समय है गेंदबाजी के मोर्चे पर। इससे पहले ओवर समाप्त किया था हार्दिक पांड्या ने। पहली गेंद पर 1 रन बटोरने में कामयाब, 161, 4 विकेट के नुकसान पर। बल्कि दूसरी गेंद थी, पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिला था और इस 1 रन की बदौलत स्कोर है इस समय 161, 4 विकेट के नुकसान पर। पाकिस्तान की टीम का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए के मुकाबले में एक स्लिप के साथ इस समय गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल की ये गेंद और गेंद के पिच के नज़दीक पहुंचकर हल्के से इस गेंद को टहला भर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में और आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से 162, 4 विकेट के नुकसान पर सलमान आगा पहुंचे 4 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस सिंगल की मदद से। तैयब ताहिर 2 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्ट्राइक लेने के लिए इस समय तैयार हैं। पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, मात्र 1 रन का योगदान दिया था उन्होंने अपनी टीम को 5 गेंदों का सामना करने के बाद। लेकिन आज अवसर है, टीम एक बेहतर स्थिति में है, यहाँ से कुछ त्वरित रनों की आवश्यकता है टीम को। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? अगली गेंद को हल्के से पुश किया, फिर से ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को वहां पर फील्ड किया जा रहा है, लेकिन चहलकदमी करते हुए तब तक 1 रन और पूरा कर लिया जाएगा। 163, 4 विकेट के नुकसान पर 35.4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है पाकिस्तान की टीम का। लगातार 3 सिंगल्स पिछली 3 गेंदों पर। अगली गेंद को खेला ऑफ साइड में, गेंद पहुंची बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 30 गज के दायरे के अंदर, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन 1 रन और बहुत तेजी के साथ दौड़कर चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और सही रणनीति इस समय पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा पूरी तरह से स्ट्राइक को रोटेट करने की कवायद में जुटे हुए नजर आ रहे हैं और अंतिम गेंद पर भी 1 रन दौड़कर पूरा कर लेंगे। मिसफील्ड हुआ वहां पर। ओवर की समाप्ति 36 ओवर के बाद 165, 4 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर। Yes, so runs coming in singles, which is what Pakistan would want. No wickets falling. Been steady bowling, steady batting. We've got now 14 overs to go. We've got 6 wickets in hand. It's finely poised now. The times when both the batsmen tried to go for the big shots, that is when they got out. Rizwan bowled as he played over and across the left-arm spinner of Akshar Patel, and then Patel taking a good running catch, a deep mid wicket. Saud Shakil off the bowling of Hardik Patel. Hardik Pandya, beg your pardon. And this one is bowled him, absolutely bowled him. Tayyab not playing the right line, playing inside the line,
and playing on the back foot to a ball that he should have gone forward to, and that's the 5th wicket then falling for Pakistan. 165 for 5, and Jadeja from absolutely nowhere. He's really looked pedestrian till now, but this time produces the goods. It was a ball that was pitched up, but really should have gone onto the front foot there, the batter, but did not move his feet and tried to play the ball away down to third, and beaten all ends up, both in the flight and with the turn off the pitch, hitting middle and off stump. And 3 quick wickets then, redressing the balance for India as 165 for 5. Tayyib Tahir out for 4, bowled Jadeja, and suddenly the cat amongst the pigeons once again at the Dubai International Cricket Stadium. क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है सुनील कि जब एक बड़ी साझेदारी टूटती है तो फिर विकेट गुच्छों में मिलने लगते हैं, और यही इस समय देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 151 पर तीसरा विकेट गिरा और 5वां विकेट 165, यानी कि मात्र 14 रन बनते बनते पाकिस्तान की टीम ने अपने 3 विकेट गंवा दिए हैं। और जो एक एडवांटेज लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम को जिस तरह से इनिंग बिल्ड हुई, जिस तरह से तीसरे विकेट के लिए एक शानदार साझेदारी हुई मोहम्मद रिजवान और साउद शकील के बीच में, वो एडवांटेज अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान खोता हुआ नज़र आ रहा है। In fact, I saw a shot of Mohammad Rizwan sitting in the dressing room as this wicket fell. It was not a happy face, I can tell you. You have the left-hander at the crease in the form of Kushdil, and he's the one who can hit the ball long and hard. And plays it away off the edge of the bat down to backward a square, picks up his first run and takes the Pakistan score on to 166 for the loss of 5 wickets. He can hit the ball, but right now I don't think he should be looking at hitting the ball in the air. Try to pick up those singles. The next ball hitting him on the pads. This goes for an appeal. Richard Illingworth says no. Perhaps it was bat onto pad. So it hit him in front. Rohit Sharma having a chat. KL Rahul not interested, and that's what I thought. It went off the inside edge onto the front pad, and that's why Illingworth had nothing to do with it. We wait and see exactly what happened. Yes, indeed, it was off the bat. This time it's slightly short of length and cut away down to deep backward point. Pick up a single over there as Shubman Gill tidies up, and 167 for 5 then, just the singles. So slightly short of length outside the off stump, and easy pickings in terms of putting the ball away and picking up that single rotating strike. And now you have Kushdil on strike. Jadeja picking up his first wicket in this innings, in this over. It's slightly expensive, 33 runs in the middle of his 6th over. This one was the arm ball as he tries to play it away towards the covers. Ball goes squarer, and he thinks about a single. In fact, the non-striker does. That's Salman, and Kushdil sends him back saying, no, nothing there. And it is going to be Jadeja. Comes in and bowls, and this one played off the front pad but straight to backward a square, and there is no run. So tight over here from Jadeja. 167 for 5 after 37. तो 37 ओवर के बाद 167, 5 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर। और जो अब से कुछ देर पहले संभावनाएं नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान शायद भारत के खिलाफ इस मुकाबले में 270, 280 के आंकड़े को छू सकता है, वो संभावनाएं अब लगातार क्षीण होती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरह से 151 से लेके 165 तक के सफ़र को पूरा करते करते मात्र 15 गेंदों में 14 रन बटोरते हुए भारत ने 3 विकेट हासिल किए हैं। अक्षर पटेल, जिनका आज निश्चित रूप से दिन है, काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन, चाहे गेंद से बात की जाए, चाहे क्षेत्र रक्षण से बात की जाए, बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने अब तक किया है। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद पर 1 रन बटोरा वहाँ पर सलमान आगा ने, और इस 1 रन की मदद से उनका व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 7। और पाकिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर 168, 5 विकेट के नुकसान पर। अक्षर पटेल इस समय एक बार फिर से तैयार, मन में ताना बाना बुनते हुए कि किस तरह से विकेट हासिल किया जाए। खुशदिल शाह, जिन्होंने पिछले मैच में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, ऑन साइड पर 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं मिलेगा। एक बढ़िया पारी खेली थी 69 रनों की, मात्र 49 गेंदों में पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और बेहतरीन स्ट्राइक रेट 140 के आसपास का स्ट्राइक रेट था।
क्या आज उसकी पुनरावृत्ति कर पाएंगे? पाकिस्तान के समर्थक दर्शक ज़रूर उनसे वैसी ही पारी की पुनरावृत्ति देखना चाहेंगे, लेकिन भारतीय प्रशंसक दर्शक कोशिश में रहेंगे, बल्कि अपेक्षा ये रहेगी कि भारतीय गेंदबाज उनको जल्द से जल्द पवेलियन वापस रवाना करें। अगली गेंद पर 1 रन का और इजाफा, खुशदिल शाह के बल्ले से निकला ये रन और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 159 5 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों का आना बाकी है। रनों की औसत रफ्तार है 4.49 रन। अक्षर पटेल अराउंड द विकेट क्रीज के कोने से और इस बार फ्रंट फुट पे आकर इस गेंद को ड्राइव किया हल्के हाथों से ऑन साइड की दिशा में सलमान आगा ने, लेकिन फील्डर वहां पर 30 गज के दायरे के अंदर मिड विकेट क्षेत्र में मौजूद हैं। और अगर आप इस समय चेहरे पर हाव भाव देखें मोहम्मद रिजवान के, वो अपनी कहानी खुद बयां करते हैं कि जो एक एडवांटेज मिल चुका था उनकी और साउद शकील की साझेदारी की बदौलत पाकिस्तान की टीम को, वो इस समय पाकिस्तान की टीम कहीं ना कहीं गंवा बैठी है। इस ओवर की अंतिम गेंद, इस ओवर में मात्र 2 सिंगल्स अब तक लिए जा चुके हैं। अगली गेंद को फ्रंट फुट पे आकर खेल दिया है स्वीपर कवर पर खड़े हुए फील्डर की तरफ, एक आसान से रन के लिए। ओवर की समाप्ति 38 के बाद पाकिस्तान 170 5 विकेट के नुकसान पर। छोटी छोटी बातें हैं ये बड़े काम की बातें हैं, आओ सीखे सब मिलकर ईंधन कैसे बचाते हैं। जब बर्तन पर हो ढक्कन तो कम लगता है ईंधन, आंच धीमी रखोगे तो बचत की होगी खन खन। बर्तन ज्यादा ना हो मोटे ना हो ज्यादा पतले, इससे खाना जल्दी बने गैस भी लंबा चले। जब खाना पक रहा हो तब लेते रहो टो, जो पक जाए तो याद से बंद कर दो गैस स्टोव। छोटी छोटी Cook smartly. Help conserve energy. Issued in public interest by oil and gas companies in public sector. So the first ball of the 39th over, bowled by Jadeja, has been driven to extra cover, and Salman Agha picks up a single. Khushdeil Shah now on strike. He's on 2, 171 for 5, the top of the 39th. There goes Jadeja, and this one has been reverse swept and is running way down towards the third. Oh, great fielding there by Shreyas Iyer, who prevents the ball from going across the boundary, and they pick up 3 runs. It was reverse swept towards the extra cover region, and very good running there and fielding by Shreyas Iyer. Fleet of foot, and about 3 runs picked up. You can see over there exactly what he brings to the party. Khushdeil Shah, the reverse sweep from off and middle stumps, and Shreyas Iyer a great diving stop and preventing the ball from going over the boundary. 174 for 5 then with that 3. Khushdeil moves on to 5, and Salman Agha, who is a right-handed batter, comes to face. And this one is pushed away just to the right of extra cover, and before long off can run to his left and pick up, they get a single. So no boundaries, really. It's just been the 3 that we saw in that one. A very good shot, that reverse sweep in front of square, which is unusual. Normally it goes behind square. And 5 runs in this over of 3 deliveries already. 175 for 5. This time it's a quicker delivery, the arm ball. And you could see over there that he was surprised by both the pace and the bounce. Was Khushdeil, and all he could do was bunt the ball back down the wicket for Jadeja to pick up on his follow-through. The current run rate then just 4.5, 4.53 to be exact. 175 for 5. Here goes Jadeja. Once again, it's a quicker delivery on the middle and leg stumps, and is tucked away down to deep backward square. And they try and go through for 2. In fact, they do, because deep backward square was right on the boundary. Mohammad Shami had to make 20 yards in, and they saw it was Shami. They were quickly off the blocks, the 2 batters. They were able to pick up 2. So 3 to 5 to 7 runs of 5 deliveries in this over. Already projected run rate, or projected score rather, at 8 runs and over, 266. And we were only talking about 250 being a very good score. So here's Jadeja, and this one on the off and middle stumps, and has to push it away to mid wicket. End of the 39th over is a dot ball, 177 for 5. And the last ball of the second power play, or rather last over of the second power play, is going to be bowled right after this. Who's it going to be? I assume it's going to be Akshar Patel. Remember, India still have 7 minutes of the clock to make up. They were 15 minutes behind the clock at one stage, so they made up quite a bit, but still 7 minutes. And it remains to be seen whether that is going to come back to bite them at some stage in this game.
पाकिस्तान 177 5 विकेट के नुकसान पर 39 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ से पाकिस्तान की पारी के 11 ओवर और बचे हैं और देखना होगा कि ये दोनों बल्लेबाज कब अपने हाथ खोलने की कवायद में जुटते हैं। अक्षर पटेल गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से नज़र आ रहे हैं। अब तक उन्होंने 8 ओवर में 35 रन दिए हैं और एक सफलता हासिल की है। नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद सलमान आगा ने इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए खेल दिया है फाइन लेग के दिशा में। फील्डर वहां पर दौड़ते हुए गेंद को इससे पहले कि फील्ड कर पाएँ आसानी के साथ दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए गए और इन 2 रनों के साथ स्कोर पाकिस्तान की टीम का 179 5 विकेट के नुकसान पर। सलमान आगा 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्ट्राइक लेने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं। 14 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है इन 12 रनों को बनाने के लिए और उनके बल्ले से अभी तक एक भी चौका नहीं निकला है। पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखें तो एक बार फिर से राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बीच मैदान पर और अक्षर पटेल सामने है अराउंड द विकेट क्रीज के कोने से। इस बार गेंद हवा में थोड़ी सी उठी थी, जैसे ही गेंद को वहाँ पर ड्राइव किया था, लेकिन वाइडिश मिड ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद, गेंद को वहाँ पर फील्ड किया गया कुलदीप यादव के द्वारा और गेंद को वहाँ पर इससे पहले कि फील्ड करके थ्रो कर पाते 1 रन लेने का आसान सा अवसर सलमान आगा के लिए बन चुका था। खुशदिल अब स्ट्राइक पर हैं 7 के व्यक्तिगत स्कोर पर। पहली 2 गेंदों में 3 रन आ चुके हैं अक्षर पटेल के इस ओवर में। एक बार फिर से तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और इस बार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए खुशदिल ने इस गेंद को मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खड़े हुए फील्डर हर्षित राणा की तरफ एक आसान से रन के लिए। इस 1 रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर अब 181 5 विकेट के नुकसान पर। हमारे स्कोरर BS रावत बता रहे हैं कि पिछली 30 गेंदों पर पाकिस्तान के बल्लेबाज कोई चौका नहीं जड़ पाए हैं। अगली गेंद इस बार ड्राइव किया लेकिन विराट कोहली के पास सीधा गेंद पहुंची। रनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं। पहली डॉट गेंद इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में कुल मिलाकर 4 रन आए हैं। पहली गेंद पर 2 और उसके बाद 2 सिंगल्स और फिर अगली गेंद डॉट गेंद साबित होती हुई। एक बार फिर से उसी किस्म के गेंद, उसी किस्म का स्ट्रोक और वही फील्डर विराट कोहली। रनों की संख्या में इस बार भी कोई इजाफा नहीं। डॉट बॉल आती हुई लगातार दूसरी। अक्षर पटेल अपने इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर और इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई इस गेंद को स्वीप करने में कामयाबी हासिल की है सलमान आगा ने डीप स्क्वायर लेग पर, इससे पहले कि गिल वहां पर गेंद को फील्ड कर सकें। मुझे लगता है कि आसानी के साथ 2 रन दौड़कर पूरे कर लेंगे। जी हाँ, 2 रन उनके खाते में और 40 ओवर के बाद स्कोर है पाकिस्तान का 183 5 विकेट के नुकसान पर। Yes, that's right. So runs coming in 1s and 2s, but most importantly, they've got 5 wickets in hand. Now the 40 overs have been done. We're going to see the third and final power play. 60 deliveries to go, and you have 2 hard hitters at the crease. But remember, they are the last 2 hard hitters, though. Shaheen Shah Afridi and Haris Rauf can tonk the ball around a bit. The overs between 31 and 40, 54 runs have been scored, and 3 wickets have been lost by Pakistan. So now, all to be seen what's going to happen in the last 10 overs. 183 for 5, the run rate 4.58. And if they have to lift it up to 250, 260, they've got to go at least 6, 7 runs and over. And 7 boundaries in overs number 11 to 40 and 6 in overs number 1 to 10. No 6s so far in 40 overs in the Pakistan innings, which tells its own story. Kuldeep Yadav now coming in. He's going to be bowling his 6th over, beg your pardon, and this one drifting onto the pads and tucked away down towards mid-wicket by Khushtil, picks up a single. Moves on to 9 and Salman Agha then. His first taste of Kuldeep Yadav, who's been slow, and that's the way that he bowls. He flights the ball, gets the ball to fizz off the deck, drop on the batsman, beat him in the air. We haven't seen too much of that so far. 5.1 overs, none for 24. Comes in and bowls, and this one, it is the reverse sweep. It takes the top edge of the bat, but they're able to pick up a single before Hardik Pandya can, beg your pardon, Mohammad Shami can clean up at short third. And they go through for a single. Beg your pardon, that was a left-hander, so it is short fine, not short third. It is now going to be Khushtil facing up, and that one is hit in front of the stumps and asked for the LBW as he went for the reverse sweep. Did Khushtil. Richard Illingworth not interested, runs up there, does
Rohit Sharma to speak to Kuldeep Yadav. Kuldeep Yadav shaking his head. Normally he's very animated about these things. He goes for the DRS, which has its own drama. Ashish Charango, the first DRS that's been taken by India. Not very, let's say, confident about what they're doing, but because they have two already into the last 10 overs, if they can actually get Kushdil, then that would be something quite... It's all very hushed and pleasant, and no real excitement in that. Everybody having a bit of a giggle. Okay, if we got to take it, we might as well take it. Now, even Kuldeep Yadav, you can see over there, all of them having a bit of a giggle. And in fact, actually, it's not a very bad shout. I don't think that there was any bat on it. Michael Goff is the third umpire. I don't think that there was any bat. We wait and see. Snicko, there is nothing. Flat line. And he was kneeling down as he went for that reverse sweep. So let's see whether there's something that was pitches outside the line, hits him on middle stump, and in fact it is the umpire's call. So it could well have been given out because a large chunk of the ball was hitting the stumps, but Richard Illingworth had nothing to do with it and therefore is not out. But really, that to my mind, if he hadn't touched the ball, which he hadn't, was a good shout. And that is what I keep wondering sometimes. You see umpires, different types of umpires having different standards. That was hit plumb in front of middle stump. Nevertheless, I would say a life for Kushdil. Here goes Kuldeep Yadav, and this one was the orthodox Chinaman that turned away from the left-handed batsman. And you can see Kuldeep not very lucky. He had a catch dropped in the previous game by Hardik Pandya, and now he's had an LBW turned down, which could well have been given out by Richard Illingworth, who said, well, listen, I really thought it was going down the leg side, but it was much, much closer than what it seemed. Nevertheless, here goes Kuldeep Yadav. And this time it is the googly, and it's pushed away to the right of backward point. They pick up a single, and it is 40.5 overs that have been bowled. 41st over coming to the conclusion, 187 for 5. 4 runs in this over. Could have been a successful over. Wasn't to be. And here goes Kuldeep. Comes in and bowls to Kushdil, and this time is tucked off the middle stump down towards the deep backward square. And Jadeja gives chase, keeps the scoring down to 1. Kuldeep Yadav walks away disconsolate. End of the 41st over, 188 for 5. छोटी छोटी बातें हैं ये बड़े काम की बातें हैं आओ सीखे सब मिलकर ईंधन कैसे बचाते हैं जब बर्तन पर हो ढक्कन तो कम लगता है ईंधन आंच धीमी रखोगे तो बचत की होगी खन-खन बर्तन ज्यादा ना हो मोटे ना हो ज्यादा पतले इससे खाना जल्दी बने गैस भी लंबा चले जब खाना पक रहा हो तब लेते रहो टो जो पक जाए तो याद से बंद कर दो गैस स्टोव छोटी छोटी Cook smartly. Help conserve energy. Issued in public interest by oil and gas companies in public sector. तो पाकिस्तान 188 5 विकेट के नुकसान पर 41 ओवर की समाप्ति के बाद कुलदीप यादव के पिछले ओवर के दौरान काफ़ी नज़दीकी मामला था. एम्पायर्स कॉल हुई, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में वो निर्णय जा सकता था. फिलहाल नए ओवर की शुरुआत अक्षर पटेल के द्वारा. पहली गेंद खुशदिल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद के पिच के नज़दीक पहुंचकर हल्के हाथों से इस गेंद को टहला भर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में एक आसान से रन के लिए. पिछले मैच में भी सुनील आपको याद होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ कुलदीप यादव के कहने पे एक रिव्यू लिया था कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन रिव्यू में देखा गया कि गेंद लेग स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर पिच हुई थी. लेकिन यहाँ मैं कप्तान की तारीफ़ करूँगा कि आज जब रिव्यू उन्होंने मांगा तो किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट उन्होंने नहीं दिखाई और अपने प्लेयर को, अपने बॉलर को पूरी तरह से बैकअप किया. ये एक अच्छी बात है किसी भी कप्तान के द्वारा. फिलहाल अगली गेंद अक्षर पटेल के द्वारा और इस बार एक कदम आगे निकलकर हल्के से इस गेंद को पुश कर दिया फ्रंट फुट पे जाकर एक आसान से रन के लिए. सलमान आगा ने इस एक रन की मदद से उनका व्यक्तिगत स्कोर 18 पर और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 190 5 विकेट के नुकसान पर. दोनों ही खिलाड़ी बल्लेबाज एक साझेदारी को यहाँ पर उकेरने की कोशिश कर रहे हैं. 25 रनों की अब तक एक अच्छी साझेदारी 6ठे विकेट के लिए हो चुकी है सलमान आगा और खुशदिल शाह के बीच में.
अगली गेंद और इस बार इस गेंद को स्लॉक स्वीप किया, गेंद हवा में है, क्या कोई फील्डर गेंद के नीचे आ पाएगा? जी नहीं, सीधा गेंद दर्शक दीर्घा में और इस मैच का पहला छक्का आता हुआ खुशदिल शाह के बल्ले से। इन 6 रनों की मदद से स्कोर बढ़ करके पाकिस्तान की टीम का 196 5 विकेट के नुकसान पर। और जैसा कि सुनील हम पहले चर्चा कर ही रहे थे कि पिछले मैच में भी उनका शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला था। हालांकि कमबैक किया उन्होंने पाकिस्तान की टीम में, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक उन्होंने निराश नहीं किया। अगली गेंद और आगे की तरफ निकल कर इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने संभवतः पहले बल्ले और फिर पैड को छूते हुए दिशा हासिल कर ली थी। वहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन 1 रन के लिए उन्होंने वहाँ पर अपना छोर बदल लिया। और पाकिस्तान के लिए इन दोनों बल्लेबाजियों की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगली गेंद सलमान आगा के लिए इस बार टप्पा खाने के बाद लगभग सीधी रहती हुई गेंद की लाइन के पीछे आकर सीधे बल्ले से इस गेंद को हल्के से पुश किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति हुई 42 ओवर के बाद 197 5 विकेट के नुकसान पर पाक। क्या आप हर वक्त परेशानियों से घिरे हुए हैं? कोई रास्ता नहीं दिख रहा? समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। मदद बस एक कॉल दूर है। Well, that slice of luck, that LBW not given by Richard Illingworth, could that be the turning point for Pakistan in this particular game? Because in that very over, it was, in fact, the next over, Akshar Patel, who's bowled out now, 10 overs, 1 for 50. 6 was hit by Khushdil over deep mid wicket, and sometimes they say you take your luck in your hand and say, fine, I've got that slice of luck. I'd so easily have been given out. Here goes Kuldeep, the unlucky bowler, and this time gets a ball that comes back into him from outside the leg stump, tucks it away into the vacant mid wicket area, picks up a single. 198 for 5 then in the 43rd over. Certainly we're looking at a 250 if this partnership stays alive, because at around the 44th, 43rd, 44th, 45th over, they're going to go for the bigger shots. Right now, they're intent in rotating the strike, left-hand combination, as here goes Kuldeep Yadav. Left arm over to the right-handed batsman, gets the ball to come back in from outside the off stump and plays it with soft hands just forward of Jadeja, coming in from extra cover, and they're able to pick up a single. So they know that they've had this huge slice of luck. 199 for 5, not given out LBW. And the ball umpire scored, though about 3/4 of the ball was hitting the stumps. That's the way it goes in cricket. And now Kuldeep Yadav gets the ball. That is the orthodox Chinaman, but that's wide off the off stump and cracked away down to sweeper cover. They pick up a single. 3 singles in this over brings up the 200 for Pakistan in the middle of the 43rd over. Salman Agha on 19, Khushdil Shah on 20. Big round of applause from the spectators. And once again, it's just even Stevens now, nicely poised. If they can get away another 60, 70 runs in the last 8 overs, anything is possible. Here goes Kuldeep. Down the wicket goes the batsman Salman Agha, gets the outside edge. And the person you want under that skyer is none other than Jadeja, who picks that wicket up, picks that catch, and Kuldeep Yadav gets some just desserts, rewards for his good bowling. Beat him in the air, beat him in the flight, beat him off the